Hello everyone. In previous class, we discussed about what is the clamper circuit and its classification and what is the clipper circuit and the working of clipper circuit as well as the types of clipper circuit. पिछली वाली क्लास में और पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है क्लैम्पर सर्किट को, उनके टाइप्स को और क्लिपर सर्किट्स और उनके टाइप्स को. In this lecture, we will study about what is the differential amplifier, its introduction, what is it, actual में differential amplifier क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे हम इसका सर्किट बना सकते हैं, ये इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. So first topic is a differential amplifier and second one is the characteristics of a differential amplifier. फिर हम देखेंगे different characteristics क्या होती हैं differential amplifier की. After this we will move on the next topic, the differential amplifier as comparator. तो comparator की तरह भी हम differential amplifier को यूज कर सकते हैं, उसका सर्किट डायग्राम हम स्टडी करेंगे टॉपिक नंबर 3 में. नेक्स्ट टॉपिक we will also discuss about the light activated switch using differential amplifier. तो differential amplifier का यूज करके हम light activated switch का भी सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. The next topic is differential amplifier examples. So हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि differential amplifier का हम जो है वो CMMR और गेन्स जो है वो कैसे निकाल सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे. And finally the references of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start. With topic 1, name is differential amplifier introduction. The differential pair or differential amplifier configuration is a most widely used building block in analog integrated circuit design. It is the input stage of every operational amplifier. Virtually, a difference amplifier or a differential amplifier amplifies the difference between the two input signal. तो इसका मेन काम क्या है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये दो इनपुट सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करके हमें देता है. सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट. An operational amplifier is a difference amplifier. It has an inverting input and non-inverting input. तो इसमें हमारे पास दो इनपुट होते हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग. But the open loop voltage gain of an operational amplifier is too high, ideally infinite, to be used without a feedback connection. So a practical difference amplifier uses a negative feedback connection to control the voltage gain of the amplifier. तो नॉर्मली डिफरेंशियल एम्पलीफायर है क्या, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो दो इनपुट सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हमें एम्पलीफाई करके देता है. सो दिस इज नोन एज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर. The definition of the differential amplifier is: differential amplifier is a device that is used to amplify the difference in voltage of the two input signals. Differential amplifier is an important building block in integrated circuits of analog system. So this is the circuit diagram for differential amplifier using op-amps, means operational amplifier. तो इसमें हमारे पास ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक इन्वर्टिंग होता है और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है.
and this is called the operational amplifier. It typically forms input stage of operational amplifier. In simple words, we can say it is a device that amplifies the difference of two input signals. Let's have a look at the circuit diagram where an operational amplifier is used as a differential amplifier. तो इसमें हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बनाने के लिए क्या यूज किया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया हुआ है. So the differential amplifier shown in a figure is a combination of both inverting and non-inverting amplifiers. If the non-inverting terminal is connected to ground, ये देखिए ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, नेगेटिव वाले को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो इसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया है थ्रू रजिस्टर R4. If the non-inverting terminal is connected to ground, the circuit operated as an inverting amplifier and the input signal V1 is amplified by R3 by R1. तो अब जो हमारा सिग्नल जो है वो हमें एम्पलीफाई होके मिलेगा थ्रू इस वाले पाथ के होके मिलेगा, क्योंकि ये वाला पाथ हमने ग्राउंड कर दिया है. तो अब हमें R3 और R3 डिवाइड बाय R1 से जो है हमें सिग्नल V1 एम्पलीफाई होके मिलेगा. Similarly, if the inverting input terminal is connected to ground, the circuit behaves as a non-inverting amplifier with the inverting input terminal grounded. So R3 and R1 function as the feedback components of the non-inverting amplifier. Input V2 is potentially divided across resistor R2 and R4. 2 gives VR4 and then VR4 is amplified by R3 plus R1 divided by R1. With V2 is equal to 0, so V01 is equal to minus of R3 divided by R1 bracket close into V1. With V1 is equal to 0, so we get VR4 is equal to in bracket R4 divided by R2 plus R4 bracket closed into V2, and V02 is equal to in bracket R1 plus R3 divided by R1 bracket closed into VR4. Therefore, V02 is equal to in bracket R1 plus R3 divided by R1 bracket closed into bracket R4 divided by R2 plus R4 bracket closed into V2. If the input resistances are chosen such that R2 is equal to R1 and R4 is equal to R3, then V02 is equal to in bracket R3 divided by R1 into V2. Now, according to the superposition principle, if both the input signal V1 and V2 are present, then the output voltage is V0 is equal to V01 plus V02. दोनों वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे, दोनों वोल्टेज की हमने वैल्यू निकाली, उनको हम पुट कर देंगे. सो वी गेट द इक्वेशन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट माइनस ऑफ R3 डिवाइडेड बाय R1 into V1 bracket closed plus R3 divided by R1 into V2, which result in V0 is equal to R3 divided by R1 into V2 minus V1. When the resistor R3 and R1 are the same value, so the output is direct difference of the input voltage applied. By selecting R3 greater than R1, the output can be made an amplified version of the difference of the input voltage. So the next is a calculation of input resistance. अब हम निकालेंगे differential amplifier का input resistance.
So one problem with selecting the difference amplifier resistor as R2 is equal to R1 and R3 is equal to R4 is that the input resistance for both inverting amplifier and non-inverting amplifier are unequal. So the input resistance of voltage V1 is R1 as in the case of an inverting amplifier. For the non-inverting input, that is for input voltage V2, the input resistance is R2 plus R4. The difference in the input resistances causes one of the input signal to be more amplified than the other. तो अगर रेजिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा तो एक सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफाई होगा और दूसरा कम होगा. The output equations of the difference amplifier V0 can be obtained by making the ratio of R4 by R2 the same as R3 by R1 instead of making R2 is equal to R1 and R4 is equal to R3. The input resistance difference will not cause a problem if the signal source resistance are much smaller than the input resistances. Also, it is usually desired to have R2 is equal to R1 and R4 is equal to R3 in order to minimize the input offset voltage. So this is all about regarding input resistance of differential amplifier. Next one is a differential gain. The differential gain of the difference amplifier is defined as the gain obtained at the output signal with respect to the difference in the input signal applied. So the output voltage of the difference amplifier is given as V0 is equal to AD in bracket V1 minus of V2, where AD is equal to minus of R3 divided by R1 is the differential gain of the amplifier. So differential gain को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से और चूंकि differential gain है इसलिए हमने उसमें T लगा दिया है सफिक्स में. So AD, the value of AD is equal to minus of R3 divided by R1 is called the differential gain of the amplifier. Next one is a common mode input. A difference amplifier amplifies the difference between the two input voltages. Ideally, a common mode input VCM would make the inputs V1 plus VCM and V2 plus VCM, which will result in VCM being cancelled out and when the difference of the two input voltage is amplified. Since the output of the practical difference amplifier depend upon the ratio of input resistances, if these resistor ratios are not exactly equal, then one input voltage is amplified by a greater amount than the other inputs. ये अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बराबर नहीं होता है इनपुट रेजिस्टेंस तो एक जो है वो इनपुट वो ज़्यादा एम्पलीफाई होगा कंपेयर टू अदर इनपुट्स. Consequently, the common mode voltage VCM इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V और सफिक्स में CM से. So common mode voltage will not be completely cancel out. अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो हमारा कॉमन मोड का जो वोल्टेज है वो completely cancel out नहीं होगा because it is practically impossible to match resistor ratio perfectly. रजिस्टर रेशियो को परफेक्टली मैच कर पाना इम्पॉसिबल होता है प्रैक्टिकल पर्पस पर. There is likely to be some common mode output voltage. तो हमें कुछ common mode output voltage हमें always मिलता है. With a common mode input voltage present, the output voltage of the differential amplifier is given as, so the output voltage V0 is equal to AD into VD plus AC into VC, where VD is the difference voltage
जो कि हम निकालेंगे V1 माइनस V2 से, एंड VC इज कॉल्ड द कॉमन मोड वोल्टेज, जो कि हम निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 करके. So this is all about the common mode inputs. Next one is a common mode rejection ratio CMRR. ये बहुत ही important है. CMRR जो जिसको हम बोलते हैं common mode rejection ratio. The ability of a differential amplifier to reject common mode input signal is expressed in terms of common mode rejection ratio, in short CMRR. The common mode rejection ratio of the differential amplifier is the mathematically given as the ratio of differential voltage gain of the differential amplifier to its common mode gain. So the value of CMRR is equal to mod of AD divided by AC. AD जो होता है वो हमारा डिफरेंशियल गेन होता है और AC जो होता है वो कॉमन मोड गेन होता है, कॉमन मोड वोल्टेज गेन. Ideally the common mode voltage gain of the differential amplifier is 0. Ideally जो होता है वो हमारा common mode voltage gain means AC is equal to जो होता है वो 0 होता है. Hence the CMRR is ideally infinite. तो अगर इस फॉर्मूले में हम ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें अगर हम इसकी AC की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी. So hence the CMRR means common mode rejection ratio is ideally infinite. Ideally जो होता है वो infinite होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली में हमारे पास जो वोल्टेज है दो रेजिस्टेंस है उनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती. सिमिलरली उसके थ्रू हमें जो हमारा कॉमन मोड वोल्टेज गेन है वो प्रॉपरली कैंसिल आउट नहीं होता, इसलिए उसकी हमें कुछ वैल्यू मिलती है, 0 वैल्यू नहीं होती. बट आइडियल केस की अगर बात करें तो उसमें वोल्टेज जो कॉमन मोड वोल्टेज गेन होता है वो 0 होता है, इसलिए हमारा जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी. Next topic is the characteristics of differential amplifier. Next is the characteristics of a differential amplifier are as following. The differential amplifier provide high differential voltage gain. It has low common mode gain. It has high input impedance. It has low output impedance. It has high common mode rejection ratio, and the differential amplifier has large bandwidth and low offset voltage and current. So these are some characteristics of differential amplifier circuit. The next topic is differential amplifier as comparator. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हम देखेंगे कंपैरेटर की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं. A differential amplifier circuit is a very useful operational amplifier circuit. Operational amplifier को हम शॉर्ट में op amps बोलते हैं. Since it can be configured to either add or subtract the input voltage by suitably adding more resistors in parallel with the input resistors. So this is the circuit diagram for Wheatstone bridge differential amplifier. So a Wheatstone bridge differential amplifier circuit design is shown in a figure. The circuit behave like a differential voltage comparator. तो ये सर्किट जो है वो डिफरेंशियल वोल्टेज कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है. By connecting one input to a fixed voltage and the other to the thermistor or a light dependent resistor, the differential amplifier circuit detects high or low level of the temperature or intensity of the light
as the output voltage become a linear function of the changes in the active lag of the resistive bridge network. A Wheatstone bridge differential amplifier can also be used to find the unknown resistance in the resistive bridge network by comparing the input voltage across the resistor. तो इससे हम अननोन रेजिस्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू हम कंपेयर और कंपैरेटिव सर्किट भी बना सकते हैं. So the next topic is light activated switch using differential amplifier. The circuit shown in a figure act as a light dependent switch which turn the output relay either on or off. As the intensity of the light falling upon the light dependent resistor LDR, ये होता है LDR, ये होता है हमारा लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, exceed or fall below a preset value at the non-inverting input terminal V2. तो LDR को हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट किया हुआ है और जो हमारा रिले सर्किट है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल. The voltage V2 is determined by the variable resistor VR1. The resistors R1 and R2 act as a potential divider network. A fixed reference voltage is applied to the inverting input through the R1 and R2. The same circuit can be modified to detect variation in temperature simply by replacing the LDR by a thermistor. By interchanging the position of LDR and VR1, the circuit can be made to detect dark or light, or we can say that heat or cold with the use of a thermistor. The next topic is a differential amplifier examples. So question is that determine the output voltage of a differential amplifier for the input voltage of 300 microvolt and 240 microvolt. The differential gain of the amplifier is 5000 and the value of CMRR means common mode rejection ratio is number 1. पहले हमें कंसीडर करना है CMRR की वैल्यू 100 और सेकेंड टाइम्स 10 raised to the power 5 मीन्स CMRR की हमें दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और निकालना क्या है हमें डिटरमाइन दी आउटपुट वोल्टेज. तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्वांटिटीज क्या है, उसके बाद क्या क्या निकालना है सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. So the differential amplifier for the given data is represented as shown in a figure. So this is the amplifier. इसमें हमारे पास जो वोल्टेज दिए गए हैं V1 हमने मान लिया 300 माइक्रोवोल्ट दिया हुआ है और V2 हमारे पास दिया है 240 माइक्रोवोल्ट, और हमें गेन दिया हुआ है डिफरेंशियल गेन AD की वैल्यू 5000 और फाइंड आउट करना है हमें V0. नंबर 1 CMRR, वी नो दैट अभी हमने पढ़ा CMRR का फॉर्मूला होता है AD डिवाइडेड बाय AC. सो CMRR की वैल्यू मेरे पास है 100, AD की वैल्यू हमारे पास है
5000 divided by AC. So we can find out the value of AC. AC is equal to 50. After this, we know that the formula of VD is equal to V1 minus of V2. So put the value 300 minus 240. So we get 60 microvolt. Similarly, we can find out the VC. So VC is equal to V1 plus V2 divided by 2. So we can find out the value 540 divided by 2. So we get 270 microvolt. So finally, the output voltage V0, we know that the formula AD into VD plus AC into VC. अभी हमने previous वाली slide में इस formula को देखा था, study किया था. Put the values. So we get the output voltage V0 is equal to 313500 microvolt, or we can say that 313.50 millivolt. तो इस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये वाले पैरामीटर्स गिवन है तो. अब सेकंड केस हमारा रहेगा, ये तो केस नंबर 1 हो गया जब CMRR की वैल्यू जो है 100 है. सेकंड केस रहेगा जब 10⁵ हम CMRR की वैल्यू लेंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं. So if the value of CMRR is equal to 10⁵, so we get AC is equal to AD divided by CMRR. Put the value, so we get the value of AC is equal to 0.05. And finally, the output voltage V0 is equal to AD into VD plus AC into VC. So we get the output voltage V0 is equal to 300,013.5 माइक्रोवोल्ट, और इसको हम मिलीवोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम जो है वो आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. नोट, आइडियली AC इज 0. नॉर्मली हमें पता है कि जो हमारा कॉमन मोड वोल्टेज गेन AC जो होता है वो आइडियली 0 होता है. सो द आउटपुट इज ओनली AD into VD, which result in V0 is equal to 5000 into 60 microvolt. So we get 300 millivolt. Now next topic is a differential amplifier summary. Summarize कर लेते हैं हम टॉपिक को. A differential amplifier, also known as difference amplifier, is a useful operational amplifier configurations and that amplify the difference between the input voltage applied. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो इनपुट सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करता है. सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एम्पलीफायर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू हम इसको आसानी से बना सकते हैं. सेकंड थिंग इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन्वर्टिंग का और नॉन इन्वर्टिंग का. इन्वर्टिंग मतलब माइनस वाला और नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव वाला. इट इज यूज्ड एज अ नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन टू द कंट्रोल the differential voltage gain. Next point is the differential voltage gain of the amplifier is depend on the ratio of input resistance. तो जो differential voltage gain है means AD की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है input resistance पे. Therefore, by choosing the input resistance carefully, it is possible to accurately control the gain of the differential amplifier. The next point is the common mode gain of the differential amplifier is ideally 0. तो जो वैल्यू होती है हमारे पास AC की वो आइडियली 0 होती है, बट चूंकि हमारे जो दो रेजिस्टेंस हैं वो हमें आइडेंटिकल नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए जो हमारा कॉमन मोड वोल्टेज गेन जो होता है वो हमारा 0 ना होके उसकी कुछ वैल्यू हमें मिलती है. But due to mismatch in the resistor value, there will be a very small common mode output voltage and a finite common mode gain. Next point, by suitably modifying the resistor connections at the input terminal, a difference amplifier can be made to add or subtract and compare the input voltage level applied. तो अगर हम सुटेबल मॉडिफिकेशन रजिस्टर कनेक्शन का इनपुट साइड करते हैं
तो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बना सकते हैं ऐड, सब्सट्रैक्टर और कंपेयर सर्किट की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। So this is all about regarding the differential amplifier. Finally, the references of this presentation. So these are the references. And thank you for watching this video.